हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फिनिटी टेस्ट सीरीज। दिस इज़ अ होल न्यू कोर्स ऑन करंट अफेयर्स। सो देखो क्या होता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हिमाचल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और एनी अदर स्टेट्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो आप सभी को ये बात पता ही होगी कि यू नीड टू क्रैम थिंग्स और यू नीड टू मेमोराइज थिंग्स। आपको चीज़ें याद रखनी होती है क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, यू नो दिस थिंग। सो इसके लिए आपके पास सिर्फ एक मात्र रास्ता है, दैट इज़ कि आप फ्रिक्वेंट रिविजन्स करें। ओके, जिससे आपको चीज़ें याद रहे और आप उन चीज़ों को एग्ज़ाम में कर सके। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग हेयर, करंट अफेयर्स आप किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, एनी मैगजीन, एनी न्यूज़पेपर, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल, डू दैट। अपने करंट अफेयर्स मंथ वाइज तैयार करते रहिए। वी आर ओनली प्रोवाइडिंग यू द टेस्ट सीरीज। हम आपको पढ़ाने नहीं वाले हैं, आपका पढ़ाया हुआ टेस्ट करने वाले हैं। सो इससे आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि आपका रिवीजन होता जाएगा। नंबर वन, आप पढ़कर आ रहे हो किसी भी सोर्स से। नंबर टू, यू विल डाउनलोड द PDF फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल प्रैक्टिस योर टेस्ट। दो चीज़ें, दूसरी बार आपका रिवीजन हो जाएगा। नंबर थ्री, वीडियो एनालिसिस जो हम दे रहे हैं हर टेस्ट के लिए, आप उसको देखोगे तो नंबर थ्री आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएगी, बैठ जाएगी। ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस न्यू कोर्स। नंबर टू, वी आर प्रोवाइडिंग यू मंथली टेस्ट्स। तो एक मंथ के 2-3 टेस्ट्स बनेंगे एंड एवरी टेस्ट विल हैव 100 क्वेश्चंस। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं, 200-300 क्वेश्चंस पर हर एक मंथ के आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, सो अगर आप इतना कर लेते हो तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहती है कि उससे बाहर आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। वी आर स्टार्टिंग विद सितंबर 2020। ओके, ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे और एग्ज़ाम की डिमांड्स के हिसाब से पिछला भी हम वीडियोस आपको बनाकर दे देंगे अगर नीड रही। सो लेट्स स्टार्ट with the first test of September month. Number one is Reserve Bank of India has recently unveiled the framework for setting up Pan India umbrella entity for remittances, small loans, retail payments, farm loans, or check payments. Answer is C, retail payments. Number two, the Central Water Commission of India tied up with which global IT company to undertake flood forecasting initiatives over the past several months? A. Google, B. Microsoft, C. Infosys, D. IBM, E. TCS. आंसर इज ए, गूगल। गूगल के साथ पार्टनरशिप की है सेंट्रल वाटर कमीशन ने। किस चीज़ के लिए? फ्लड फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव्स के लिए। नंबर थ्री, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ $3.95 million innovation challenge fund in India to support scientists in academia and industry to tackle the most acute global challenges? USA, Germany, Japan, Britain, फ्रांस। इनोवेशन चैलेंज फंड के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट किसने की है? आंसर इज डी, ब्रिटेन। Number four, the Union Cabinet approved a proposal to set up which national body that will conduct common eligibility test for selection of non-gazetted posts in central government and public sector banks? A. National Jobs Authority, B. National Recruitment Agency, C. Indian Recruitment Agency, D. Indian Recruitment Authority, or E. National Jobs Agency. Answer is B. National Recruitment Agency. Number 5. Which city has been awarded as the cleanest city for the fourth time in succession
in the country in Swachh Sarvekshan 2020 awards? And the answer for fifth is C, Indore. Very simple question. Number 6, credit or debit card payment made without actually swiping the card but by using details on the card is known as over the counter transaction, B, physical or cash transaction, C, cardless ATM transaction, D, card not present transaction, or E, POS transaction. Answer is D, card not present transaction. Number 7, TechGenesia Software, a startup from Kerala, won the national competition for developing a world-class indigenous video conference solution. What is its name? एक वर्ल्ड क्लास इंडिजिनियस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन बनाया है केरला बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी ने. उसका नाम क्या है? वीमेट, मीट्स, विकॉन्सोल, विडिकॉन or Avicon? Answer is C, Viconsol. Number 8, which short film won the first prize of Rs 1 lakh in an online short film contest on patriotism organized by the Ministry of Information and Broadcasting? Answer is D, MI. Number 9, Rajiv Kumar, former finance secretary, has been appointed new dash of India: Auditor General, Election Commissioner, Information Commissioner, Vigilance Commissioner, or Solicitor General. Answer is Election Commissioner, B. राजीव कुमार जी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इंडिया के. Number 10, how many sports person have been awarded the highest sports award, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2020? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कितने खिलाड़ियों को मिला है? आंसर इज डी, 5. Number 11, which state of USA was in the news as widespread wildfires burned nearly 1 million acres statewide in a week and destroyed hundreds of homes? तो कौन सी स्टेट थी वो यूएसए की? कैलिफोर्निया फायर्स. नंबर 12, अटल पेंशन योजना और APY is open to all saving bank or post office saving bank account holders in the age group of dash years. क्या एज ग्रुप है अटल पेंशन योजना का? इट्स C, 18 to 40 years. Number 13, which country has discovered 320 billion cubic meters of natural gas, the biggest ever natural gas reserve in the Black Sea? मैप्स की नॉलेज से भी इसको आप कर सकते हैं, बट द आंसर इज डी, टर्की. ब्लैक सी में उनको 320 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस मिली है. ठीक है. नेक्स्ट इज 14, इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल रोपवे has been started over Brahmaputra river in which state? Very simple question. C, Assam. Number 15, what is the name of the GPS based mobile app launched to monitor the plantation along the national highways? Is it Greenery or Haryali or Harit Path or Greenway or Harit Marg? Answer is C, Harit Path. Number 16, recently veteran all-rounder Lisa Sthalekar was inducted into the International Cricket Council's Hall of Fame. She played for which country? England, New Zealand, India, Australia, or South Africa? She played for Australia. Lisa Sthalekar, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है ये. Number 17, Multi Commodity Exchange of India, MCX, Mumbai launched the country's first bullion index on August 24. What is its name? फर्स्ट बुलियन इंडेक्स है ये हमारी कंट्री का. व्हाट इज इट्स नेम? नेम इज सी, बुलडेक्स.
Number 18. India celebrates National Sports Day to commemorate the birthday of which great sports person? नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद, पॉली उम्ब्रेकर, सुनील गावस्कर और दारा सिंह. आंसर इज बी, मेजर ध्यानचंद. Number 19. WHO has declared which country free from polio, making the entire Africa free from polio? Uganda, Ethiopia, Nigeria, Kenya और Sudan? इट्स सी, नाइजेरिया. नाइजेरिया लास्ट में जो है मलेरिया फ्री हुआ है इन होल ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. Number 20. James Anderson has become the first fast bowler in history to take 600 test wickets. He plays for which country? James Anderson, first fast bowler in the history to take 600 test wickets. So, कौन सी कंट्री के है जेम्स एंडरसन? ही इज फ्रॉम इंग्लैंड, बी. Number 21. The instances of violations of the Prevention of Money Laundering Act in banking are to be reported to which of the following? Financial Intelligence Unit, Serious Frauds Investigation Office, Enforcement Directorate, Vigilance Department of the RBI or Banking Ombudsman? Answer is A, FIUIND, Financial Intelligence Unit of India. Number 22. G. Satish Reddy, a renowned Indian scientist, has been given a 2-year extension till August 2022 as the chairman of which apex organization? G. Satish Reddy. ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर C, DRDO. Number 23. The Indian Air Force launched a mobile app, My IAF, as part of the Digital India initiative for sharing information about its history, selection procedure, pay and perks और all of these. तो ये सभी इसमें अवेलेबल है. आंसर विल बी E, all of these. Number 24. Neelakanta Bhanu Prakash, the 20-year-old boy from Hyderabad, won the world's fastest human calculator title. This competition was held at which place? Singapore, Incheon, Osaka, London or Manila? आंसर इज डी, लंदन में हुआ था ये. Number 25. Which state topped the Export Preparedness Index 2020 released by Niti Aayog? Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Punjab or Kerala? So Gujarat is the answer, C. Number 26. The ICICI Bank became the first bank in India to use satellite data to access credit worthiness of dash. Answer is A, farmers. Number 27. Who amongst the following is an opposite activity of speculation? Speculation का उल्टा क्या होगा? Arbitrage, long, short, hedging और spread? Answer is D, hedging. Number 28. Which insurance company launched a first of its kind insurance product called Shagun Gift and Insurance? Answer is SBI, General Insurance Company, D. Number 29. The e-commerce giant Flipkart has signed an agreement with which northeastern state to promote the state's local artifacts and handloom products on its digital marketplace? Tripura, Mizoram, Nagaland, Assam, Meghalaya. Answer is D, Assam. Number 30. Name the West Indies cricketer who became the first bowler to pick up 500 wickets in T20 cricket. Kimopal, Diane Bravo, Andrew Russell, Hayden Vlash, Fabian Allen. Answer is B, Diane Bravo.
Government launched a toll-free helpline number 1800-599-0019 for mental health rehabilitation. What is the name of this helpline? Number 31. आशा, सखी, मित्र, किरण और मदद. Answer is D, Kiran. Number 32. One of the most powerful storms in the USA's history struck Louisiana, a southeastern state of the country. What was its name? Kyle, Marco, Laura, Hannah or Bretha? Answer is C, Laura. Number 33. Government launched a next generation startup challenge contest for further boost startups and software products. What is its name? A प्रेरणा, B चैलेंजर, C चुनौती, D बोस्टो और E जेन स्टार्ट. आंसर इज C चुनौती. चुनौती दी है ये सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज की. Number 34. The issue of fresh shares by an unlisted company for the first time is called. Very simple question from economics. B. Initial public offering. IPOs बोलते हैं जब कोई नई कंपनी for the first time अपने शेयर्स को फ्रेश शेयर्स को इशू करती है. Now 35th, government has increased the award amount for the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award from 7.5 lakh rupees to how much? तो ये बढ़ाकर हो गया है 25 लाख, E 25 lakhs. Number 36, Dinesh Kumar Khara has been appointed the chairman of which big bank? Answer is B, State Bank of India. Number 37, government has launched a first of its kind GIS enabled National Land Bank portal for what purpose? So answer for this question is D, industrial investors. तो ये जो GIS enabled National Land Bank portal बना है, बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, किसके लिए? इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है ये. Number 38. Which of the following authors won the International Booker Prize 2020? Marieke Lucas Regnewald. Yes, A is the answer. ठीक है, इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2020 और ये इनकी डेब्यू नॉवल थी जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है. ओके, देन नेक्स्ट इज 39th. Onam, celebrated with fervor on August 31st, is a popular festival of which state? So Onam is a popular festival of B, Kerala. Kerala का फेस्टिवल है ओनम. Number 40. India and which other country were declared joint winners of the first ever online fight chess Olympiad? फाइट चेस ओलंपियाड जो फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया के साथ, जॉइंट विनर उसमें है डी, रशिया. इंडिया एंड रशिया दोनों फाइनलिस्ट्स थे इसमें, लेकिन ऑनलाइन हो रहा था तो कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया बीच में जिसकी वजह से दोनों को विनर घोषित कर दिया गया. नंबर 41. प्रणब मुखर्जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पास्ड अवे ऑन August 31st. He was dash president of India. He was 13th president of India. D is the answer. So 42. The Indian economy contracted by massive 23.9% in the April to June quarter. However, one sector showed positive growth. Identify this sector. Was it power, manufacturing, agriculture, mining और trading? तो जो पॉजिटिव ग्रोथ दिखी वो सिर्फ एग्रीकल्चर में दिखी है, C. Number 43. The European Investment Bank is set to invest euro 650 million for construction of first city metro line in which Indian city?
ए गुवाहाटी, बी भोपाल, सी रांची, डी कानपुर और ई मैसूरू. आई आंसर इज डी, कानपुर is the answer. Next question is 44th. The Union Cabinet approved the National Program for Civil Services Capacity Building. What is its name? Its name is Mission Karm Yogi. B. Number 45. For the first time, India ranked in the top 50 countries in the Global Innovation Index. What was its rank? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक आया है 48th. बी इज द आंसर. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया टॉप 50s में आया है. नंबर 46. हु इज द करंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? अजय कुमार भल्ला, डॉक्टर विवेक जोशी, नित्यानंद राय, शैलेश और राजीव कुमार. So out of these, Dr. Vivek Joshi is the current Registrar General and Census Commissioner of India. Number 47. The Times World University Rankings 2021 has placed which university at the top? So Times has placed the University of Oxford, D, at the top. Number 48. With which country India finalized a deal to manufacture AK-47 203 rifles in India? So इंडिया की डील हुई है रशिया के साथ. सी इज द आंसर. कि मैन्युफैक्चरिंग हो AK-47 राइफल्स की इंडिया में. Number 49. Reserve Bank of India has revised priority sector lending guidelines. Under the new guidelines, bank finance to startups up to dash crore rupees will be eligible under priority sector lending. So it's C, 50% कर दी है अब. lending का 50% priority sector में जाना चाहिए. These are the guidelines from RBI. Number 50. Indian Navy conducted bilateral naval exercise Indra Navy with the navy of which other country? सो वेरी सिंपल, इट्स विद रशिया. ठीक है, कैसे आप इसको याद रखोगे? IN फॉर इंडिया, IND फॉर इंडिया एंड RA फॉर रशिया, इंद्रा. नंबर 51. विच स्टेट टॉप्ड द चार्ट अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज इन द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग्स? सो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने सभी यूटीज और स्टेट्स को पीछे छोड़ के पहला स्थान हासिल किया है. नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ द वर्डिक्ट इन केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला? सो इसमें मेन वर्डिक्ट क्या हुई थी केशवनंदा भारती केस में? इट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड. नहीं जी, गलत है. ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है. एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बट नॉट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. डी इज द आंसर. बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर बात हुई थी कि हम बेसिक स्ट्रक्चर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. बाकी कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन अमेंड विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. Number 53. Dr. Govinda Swarup, noted scientist, passed away recently. He was known as father of dash in India. So he was known as father of radio astronomy in India. D is the answer. Number 54. Which UN agency has announced that it will be leading the global procurement and supply of the COVID-19 vaccine? UNESCO, UNICEF, WHO, WTO और ILO. Answer is B, UNICEF. Number 55. Indira Gandhi's Peace Prize 2019 has been conferred upon David Attenborough. Who is he? A noted philanthropist from Sweden, a renowned author and natural historian. Yes, B is the answer. वो एक renowned author और natural historian है, डेविड एटनबर्ग.
Number 56, as per a report by the National Sample Survey, which state has the lowest literacy rate in India? So lowest literacy rate Andhra Pradesh का है. E is the answer. Number 57, which of the following type of accounts is known as demat account? Accounts which are zero balance accounts, accounts opened for repayment of loan, accounts to hold financial securities in digital form. C is the answer. Accounts to hold financial securities in digital form. Number 58. Which state started the celebration of Himalayan Day on September 9 in 2010? कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया है सबसे पहले? उत्तराखंड. बी. 59. विच बैंक सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द ईज ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स? सो इट्स द बैंक ऑफ बड़ौदा. डी. डी इज द आंसर. बैंक ऑफ बड़ौदा को फर्स्ट मिला है, उसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड थर्ड नंबर पे ओरिएंटल बैंक. नंबर 60. Reserve Bank of India has seized the banking operation of which payment bank under Banking Regulation Act 1949? So it's Aditya Birla Idea Payments Bank. India is scheduled to host the meeting of Council of Heads of Government of Shanghai Cooperation Organization, that is SCO, on 29 to 30th November 2020 in New Delhi. Where are the headquarters of SCO? It's in Shanghai, China. B. Number 62. Who has been appointed as the new chairman of National School of Drama, New Delhi? So Paresh Rawal जी को बनाया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. So 63. Parakh, Performance Assessment Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development Program has been launched for which sector? Parakh has been launched for education sector. C is the answer. Number 64. Swami Agnivesh, veteran Arya Samaj leader and social activist, passed away in New Delhi. He is best remembered for his outstanding contributions to which field? Fighting social dogmas, fighting against dowry, improving women's literacy, releasing bonded labor, or opposing the child labor? Answer is D, releasing bonded labor. Number 65. Government announced the second edition of its state startup rankings. Which state received the status of best performer? Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat or Kerala? So which state is best performer? It's Gujarat. D. Number 66. Which of the following is popular channel of providing credit to the farmer community? So popular channel तो out of these किसान credit cards ही है. A is the answer. Number 67. Government launched a dispute redressal mechanism for the maritime sector. What is its name? Sarod Ports. Yes, it's A, Sarod Ports. Number 68. Which government department has launched a scheme called 5-star villages? 5-star villages किसकी स्कीम है? डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट. आंसर इज सी, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट्स. सी. ओके. Number 69. In which sector has the government recently raised the FDI limit from 49 to 74%? Answer is D, defense. Number 70. Country's largest piggery mission worth Rs 209 crore was rolled out in which state on September 10? Answer is C, मेघालय. मेघालय में पोर्क बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है पोर्क की, सो लार्जेस्ट पिगरी मिशन वहाँ पर
चलाया गया है गवर्नमेंट द्वारा बाय स्पेंडिंग 209 करोड़. नंबर 71, विच कंट्री टॉप द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 इज बी, हांगकांग. Number 72, UNICEF India has selected which Bollywood actor as its advocate for the children's rights campaign for every child. Campaign for every child children rights campaign के लिए आयुष्मान खुराना सी. Number 73, in the US Open Tennis Grand Slam in New York, who won the men's single title? Men's single title was won by Dominic Thiem. B is the answer. Number 74, who has been re-elected as the Deputy Chairman of Rajya Sabha? Deputy Chairman of Rajya Sabha is C, Dr. Harivansh. Number 75, India has been elected as the member of the Commission on Status of Women. It's a body under which UN agency? UN Women, ECOSOC, UNICEF, UNESCO or UNSC. So it's a body under ECOSOC. B is the answer. So this is an important question. Number 76, the Lok Sabha passed the Salary Allowances and Pension of Members of Parliament Amendment Bill 2020 to reduce MP salaries by 30%. Is the answer. Number 77, in the check truncation system, what is truncated? Amount of the check, size of the check, duration of the check, physical movement of the check, or none of these. So it's D, physical movement of the check. Number 78, Yoshihide Suga, the 71-year-old senior politician, has been elected as the Prime Minister of which country? Japan. D. 79, Lok Sabha passed the Banking Regulation Amendment Bill 2020 on September 16 to bring in what change in the banking system? तो मेनली जो ये चेंजेस हुए हैं ये कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए हुए हैं, टू ब्रिंग कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द एम्बिट ऑफ आरबीआई. सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Number 80, Dr. Kapila Vatsyayan was a prominent Indian scholar who passed away recently. Which of the following fields was not her forte? So, classical dance, art, architecture, music or art history? Answer is D, music. उनसे रिलेटेड नहीं था, बाकी क्लासिकल डांस, आर्ट, आर्किटेक्चर और आर्ट हिस्ट्री सभी उनके फील्ड्स थी. 81st, विच इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी हैज़ टाइड अप विद द स्विस रैपिडेजी of Switzerland for development of maglev train projects in India? Very important. So it's C, BHEL company, BHEL. 82, which bank has partnered with Titan Watch Company to launch contactless payment services through watches called Titan Pay? Answer is A, SBI. SBI का जो योनो है उसके साथ मिलके ये किया गया है टाइटन वॉच एंड योनो SBI से contactless payment services. Number 83, India's first exclusive private jet terminal was inaugurated at which international airport of the country? Delhi Indira Gandhi International Airport. A is the answer. 84th, Dash has become the first country in the world to issue a sovereign sustainable development goals bonds. So it has been done by Mexico. D is the answer. Number 85, which financial body has assured $2 trillion help to India to develop green buildings, improve public transport and to expand
renewable sources of energy. So answer is D, International Finance Corporation. Number 86, which state or UT topped the first ever annual India Happiness Report measuring national well-being and people's happiness? Answer is D, Mizoram at the first place. 87, which of the following account can be opened with partial fulfillment of KYC norms? Answer is D, small savings bank accounts. पार्शियल KYC चल पड़ेगी इसमें, ठीक है. Number 88. In the recently released 2020 Smart City Index, which city topped the index? So it's A, Singapore topped this index. Number 89. Who among the following was the first Labour Minister of Independent India? First Labour Minister was Jagjeevan Ram, D. Number 90. The proportion of urban population is lowest in which of the following states in India? It's B, हिमाचल प्रदेश. हिमाचल में सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है. Number 91. Which of the following schemes is not associated with development of urban areas in India? Amrut, Hriday, Prasad, Disha or PMay Urban? Answer of 91 is C. Sorry, it's D, Disha. Number 92. When was Smart Cities Mission launched in India? Smart Cities Mission was launched in India in 2015, June 2015, B. Number 93. Who among the following is not a noted name among Indian architects? सो इंडियन आर्किटेक्ट्स में नोटेड नेम BV दोशी का नहीं है. ये बाकी सभी फेमस आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडिया है. ओके, चाहे फाली नरीमन है, चार्ल्स कोरेरा है, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है या फिर लाउरे बेकर है. नंबर 94. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट मेक अ डेल्टा इन बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में कौन सी रिवर नहीं जाती है? यहाँ जो नहीं जाती, जो अरेबियन सी की ओर जाती है, दैट इज नर्मदा. सी. 94 इज सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉर्म्स यूजुअली डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एन ओशन? साइक्लोन, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफोन और चक्रवात. सो आंसर इज सी, टॉर्नेडो. Tornadoes are formed on land. Number 96. Vidarbha region is a part of which of the following states? Vidarbha region is a part of Maharashtra. Number 97. Western disturbances are low pressure depressions which occur during winters, particularly in the northern states of India. They originate from which of the following? सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ज्योग्राफी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होती है. सो इनकी वजह से जो विंटर रेनफॉल एंड स्नोफॉल होता है इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में, JNK, उत्तराखंड, हिमाचल, इधर, तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है. नंबर 98. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? केयर, सिबिल, मूडीज, S&P और क्रिसिल. नंबर 98 इज B, सिबिल, CIBIL. ये जो है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है. नंबर 99. विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू कैलेंडर मंथ्स इज सपोज टू बी पीक समर हॉटेस्ट मंथ्स? हिमाचल के पेपर्स में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, ज्येष्ठ. ज्येष्ठ जो होता है, ज्येष्ठ जिसे कहते हैं, वो पीक ऑफ समर माना जाता है, हॉटेस्ट मंथ. नंबर 100. विच among the following top massive open online courses is supposed to be the largest in terms of number of its learners and the courses offered? Udacity, Coursera, EDX, Udemy और TEDx? आंसर इज Coursera. Coursera जो है
टॉप मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में लार्जेस्ट है, ओके, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इट्स लर्नर्स एंड कोर्सेज ऑफर्ड, सबसे ज़्यादा लर्नर्स है यहाँ पे. सो दीज वर दी 100 क्वेश्चंस फ्रॉम September month